environment होता है तो कुछ चीजें नहीं होती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए. तो अभी तक हमें इंटरनेशनल हैकाथन में हम सिर्फ जा नहीं रहे, अभी तक हमें कुछ 30 के करीब 10 महीनों में अवार्ड भी मिल गया उसमें. तो जिस तरह फर्स्ट प्लेस थी हमारे डिजिटल डिफेंस हैकाथन में. इसके अलावा हमारा एक रीजनल एम्बेसडर फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था एक ऑस्ट्रेलियन हैकाथन में, जो पाकिस्तान से पहले उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो इसलिए उन्होंने हमारा भी कर लिया. तो इसके अलावा हम इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स में हेल्प कर रहे हैं, तो अभी तक हमें 10 से ज्यादा इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स मिल चुकी हैं वर्चुअल, जो कि वर्चुअल हैं, और लोकल इंटर्नशिप्स तो मेरे पास हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा ही रही हैं. देयर इज टू मच डिमांड. इसके अलावा हम जो एक और मसला होता है हमारे अभी करंट सिचुएशन का पाकिस्तान में, कि कंपनीज पहले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं और फिर उन्हें ट्रेन करती हैं फॉर 2 months 4 months. तो उससे जब वो सिलेक्ट करती हैं तो जो बच्चे थोड़ा सा लेवल से नीचे हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज के हैं, उनका चांस ही नहीं बनता. इवन गोल्ड मेडलिस्ट को जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में, जो टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज के हैं, जो कि प्रूवन है कि अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देते हैं और दे नेवर हेड बैक. तो हम कंपनीज को ये कह रहे हैं कि आप पहले जो आप टूल्स यूज करते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी आप स्टैक यूज कर रहे हैं, तो पहले हमें आईकोड गुरु को उसका बूट कैंप चलाने दें, और फिर जब बूट कैंप जो बच्चे फिनिश कर लें तो आप उनमें से इंटरव्यू कर लें. तो दिस मेक्स इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. ये हर एक को इक्वल चांस देता है, बेशक बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी का हो या टीयर 2 नई यूनिवर्सिटी का हो. तो हमने Rive.ai सिलिकॉन वैली एक स्टार्टअप उसके लिए बूट कैंप चलाया था. तो एट द एंड ऑफ द बूट कैंप उन्होंने 10 लोगों के इंटरव्यू किए थे, जिनमें से उन्होंने 4 को इंटर्नशिप दे दी थी, जो कि अब जॉब में चेंज हो चुकी है. इसी तरह हम एहसास लैब्स के लिए भी एक बूट कैंप चला रहे हैं, और कुछ और बूट कैंप्स पाइपलाइन में जिनमें हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम यूएस में देखें तो हमारे स्टूडेंट्स को जनरल मोटर्स में, अमेजोन में, ब्रॉडकैम में और अब कुछ और बड़ी कंपनीज में जॉब्स मिल चुके हैं, जो कि हमारे यूएस से सेशन ले रहे थे. हम एडमिशंस के लिए भी स्टूडेंट्स की काफी हेल्प कर रहे हैं हायर एजुकेशन में. उसके लिए आई थिंक हमारा भी आइल्स का 5th बैच स्टार्ट हो रहा है इस मंडे से. इसके अलावा जीआरई के हमारा भी इस फ्राइडे को एक बैच एंड हुआ है. उसके अलावा हम सीवी में हेल्प कर रहे हैं, सीवी राइटिंग में, एसओपी राइटिंग में, एंड इवन वी हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू राइट प्रॉपर ईमेल्स टू प्रोफेसर्स टू आस्क फॉर फंडिंग, और टू हाउ टू सेंड कोल्ड ईमेल्स फॉर एग्जांपल. और इस साल हमारे 7 स्टूडेंट्स को यूएस में एडमिशन मिल गया फंडिंग के साथ, और अप्लाई भी 7 नहीं किया था. अदर स्टूडेंट्स उन्हें लगा कि नहीं यूएस एक मुश्किल जगह, तो यहाँ जाना शायद मुश्किल होगा. तो होपफुली नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर एप्लीकेशंस. तो ये आज के वेबिनार की हम बात करें तो टुडे वी आर हैविंग डॉक्टर इशफाक अहमद विद अस. तो ये IEEE फेलो हैं. बहुत कम पाकिस्तानीज हैं जो IEEE फेलो हैं, मे बी लेस देन 10 आई थिंक इन लास्ट 80 years. And he is professor at UT Arlington. He is graduate of UT Lahore, GC Lahore, and he is professor of computer science and engineering and director in his lab. And one of his paper is 4th among the highest cited papers on parallel and distributed systems. So you can read more about him on his web page. काफी सारी details हैं, because he is a very senior professor, और इनकी काफी सारी accomplishments हैं जो कि मैं इस वेबिनार में कवर करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये इनकी गूगल स्कॉलर का पेज है. आई थिंक इट स्पीक्स इट अ लॉट. तो perhaps he is one of the highest cited Pakistani based researchers, having more than 27,000 citations, और इनका H index it is awesome 60 है. तो मेरे ख्याल में ये शायद पाकिस्तानी बेस्ड प्रोफेसर में हाईएस्ट होगा. I might be wrong, but I think I have never seen him more than that. So that's all, sir. तो बाकी अभी मैं डॉक्टर इशफाक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेक ओवर करें यहाँ से. और sir, over to you. Thank you very much. Okay. My dear brother, Dr. Zafar Shahid, you are very kind. Thank you for the introduction. I don't deserve that. Thank you. You are being sincere, but it may be a little bit exaggerated. So my
academic accomplishments are just normal for from American standards. So I am not the best professor. There are other scholars who have far more achievements than I have. So but that being said, thank you very much. So Assalamu alaikum and good evening to all of you. I am honestly very, very pleased to be giving this talk. This sort of gives me an opportunity to speak to the best talent in Pakistan and get many things off my heart and to connect with you in a very brotherly fashion or fatherly fashion. But the idea is basically there is so much talent in Pakistan. And unfortunately, our universities in Pakistan are not at par with international standards. They do teach you basic curriculum, coding, and basic engineering concepts, but they don't teach you many, 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 many things. But so I don't want to be criticizing and all that, but we have to be very open-minded. When we address issues of helping people and helping students and improving our standard, we have to first identify what is missing. So I'll come to that. My talk is going to be in English. I think we can throw in English or even Punjabi. I am a pure Pakistani Punjabi person, so it's not a problem. But most of the terms which I use for my talk, they are in English. So therefore, I'll stick with English. Dr. Shahid, is it necessary to keep the webcam on, or I can turn it off, just use... Sir, we prefer to turn it off actually, ताकि जो bandwidth के issues हैं, right, students के वो ना हो, तो मैंने इसलिए अपना भी on नहीं किया वो. So I'll turn it off. Yes. Cam. Okay, so this is better. So essentially, first of all, I really admire Dr. Zafar Shahid. What he's doing is really offering a practical hand, and he's hitting the right spots. He's doing such a great, benevolent work. It's very commendable. And I really thank him for doing that. This is called helping in real practical sense rather than just by words. So hopefully he will give me opportunity to help him as well, and I will be very glad to. So today we are going to talk about how to apply for admission and gain scholarships. So I have to put all these things in perspective. That's why I'm talking about these basic things. I come from Lahore originally, went to UET, and when I share you some very interesting story briefly of my life. When I was in school and college, I never thought I would go study computers or electrical engineering. Computers were new, PCs were there. I'm talking about 1985, probably before many of you were born. And when I applied for admission at UET, I wanted to apply for architecture. And at the last moment, I changed it to electrical engineering. And then I liked electrical engineering very much. And then there were one or two courses on computing. We didn't have computer science department. We did have computer science department, but it was very math oriented. It didn't make any sense. And nobody was interested in it. But we had some great teachers in computer science. Dr. Shahid Bukhari was very inspirational. But before he taught, I took a course on programming, and I almost failed in the course. And after that, my hatred and disliking for computers started. And I decided I would never do computing. And I took another course from Dr. Bukhari, which was more on the digital logic design. I enjoyed that. But after that, I just decided computing is not for me.
Actually, I had no trust in computing, and I thought it was something which was just to show off. It didn't have any real meaning and all those kind of things. That's one thing. Number two, I wasn't even interested in being an engineer, but okay. So I became an engineer. And number three is that I tried to look for a job. And then some friend said, okay, why don't you apply for a lecturer position at UT? And I decided I never wanted to be a professor. So didn't want to, and then many of my friends wanted to go to the US for higher studies, and I was never interested in higher studies. So no interest in higher studies, no interest in computing, and no interest in being a professor. All these three things turned out to be incorrect, and how life changes. That is amazing. And the position, my current job, everything, I just love it. And I'm very, very satisfied person, alhamdulillah. So moral of the story is this. You never know what Allah subhanahu wa ta'ala has for you. Sometimes he provides you opportunities and you should take it. And second thing is always be humble and recognize that your ability is only a small portion of your success. It's Allah subhanahu wa ta'ala's will, and your parents' prayers and guidance, they are far more influential in shaping your future. So always, if there is an opportunity, take it. So that's one thing. Number two, how to apply it to universities, basically. So that's a very big question. It has many answers. First, students are very conscious of university ratings. So let's talk about university ratings. By the way, anyone can interrupt me. Feel free to stop and ask any question, and I'll be glad to. But I assume after I finish my talk, there will be questions and answers. So that is fine too. So the first question is universities ratings. The university ratings is a game, actually. Some of the game is a fair game, and some of the game is a unfair game. There are as many university ratings as the universities, believe it or not. Even in the US, there is a wide range of universities, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, teaching-oriented, bachelor's degree colleges, master's degree colleges, community colleges. And it's not that tier 1 universities like MIT or Stanford are the best. They are best in some sense. There are top colleges in the US, which are tier 1 within their own context. However, for let's say higher degree education, again, there are many ratings, and now Chinese universities are making very good progress. So maybe I can give a talk on Chinese universities some other time in another webinar. I think you will be surprised to know some of the things about Chinese universities, because I'm very familiar with them. I worked as an assistant and associate professor in the Hong Kong University of Science and Technology before coming back to the US. So I have seen China's progress, but that's another discussion. And then there are good universities in the Middle East. Unfortunately, so I'm going to say something which you may not like. Unfortunately, none of Pakistan's university has really good international recognition. I am not, UT produces some of the best students, then there's a NAST, there's LUMS. But you know, what is good about them is just the students. You are the best
product of those universities. The universities themselves don't have the culture. They try, some of them, there is always some great professors, but the universities in Pakistan are very unstructured. One of the reasons is there are too many universities, especially this previous administration and the current administration too. This person, Ataur Rahman, has destroyed higher education in Pakistan by creating so many universities which don't have any standards. And it's very, very sad because talented students from poor families go there, their parents raise money, they save money to give them education, hoping that their son or daughter will graduate, find a job. And there is no connection between jobs and Pakistani universities' output. Pakistani universities hardly contribute to the national economy or preparing the workforce. It is very sad. And on top of that, they bring in university ratings. And the purpose of those ratings is just to beat your own drum. I will give you just one or two examples of why this is the case. For instance, very difficult to get a job, as Dr. Zafar was saying, and he's doing all these great things to help you guys. Really, I want to say hats off to Dr. Zafar Shahid for doing all of these great things. Really, that's absolutely noble. So we will continue to do that. But for common person, common student, even coming from quote unquote top universities and not being able to find a job, that's very sad. That's one thing. Second thing is I'm talking about higher education, okay? I'm not talking about undergraduate education. By the way, undergraduate education in Pakistani universities is also not accredited. They're not evaluated according to international standards. For instance, there is a ABET, ABET organization, which is Accreditation Board for Engineering and Technology, that provides accreditation to universities around the world. But this culture doesn't even exist in Pakistan. The purpose of accreditation is to examine macroscopically and microscopically the curriculum, the university environment, teachers, facilities, and all those things, and then say, okay, this meets the bare minimum international standards. Pakistan doesn't even have this culture, and people like Ataur Rahman and all that, who are bogus products of Pakistan themselves and written thousands of bogus papers, they will continue to speak sweet words to people like Imran Khan, Nawaz Sharif, and none of them have any clue about higher education or basically even high school or college education. The biggest losers or the biggest, the largest community who suffers from all of this is the poor talented students. Students are talented anywhere around the world, and especially in Pakistan. And that is the individual effort. And they don't have the mentorship and the environment in which they can thrive. So that is the sad thing I'm talking about. So what do? We use plans like Dr. Zahir Shahid is doing, and also we help them get admission into higher education in Europe or US, Canada, Australia, UK, and even in China, but good universities in China. So that's the idea. So university rankings are very misleading, very, very misleading. In the US, universities ranking are also many, many kinds. Every university has its own ranking. Okay, this university is considered number one for minority students. This university is considered number one
for best value for money. This university is considered number one for providing best undergraduate support environment. This university is best for producing most master's degree. So you can have like hundreds of such measures and have hundreds of ratings. So that's just the human nature. Now, in terms of true research rating, so basically it's number one, number two, number three, you know, that's kind of meaningless rating. What is more meaningful rating is tier 1, tier 2, tier 3 universities. So UT Arlington is not among the top 50, but it is according to many ratings in the 60s or 70s. And again, it's not a university rating, it's within the university program rating. So computer science and engineering, electrical engineering, UT Arlington, and nursing and one or two other subjects, UT Arlington is considered tier 1 university. And there are at least 100 tier 1 universities in the US. Even tier 2 universities are, that's not that they're bad or anything. It's just that it's a different band. But ranking doesn't mean anything beyond a certain point. What matters is if you have a scholarship, if you have admission, and you have good professor. So these things also matter. Now, how to apply? So again, I have been a professor for nearly 29 years, and so I understand the process. The best way to approach is to make a connection with the professor. Write down an email to professor in a university. So you will have to search universities and their computer science department, professors' website, what research they're doing, if it matches your interest, and write an email to them in a very, very professional manner. So here are some tips. And the tips are based on typical emails which I receive from all around the world, and how sadly the emails are written very, very poorly coming from Pakistan. And that is a very sad thing, because you guys don't receive much education on professional communication, English writing, and English presentation. Pakistani students will speak good English, but very few of them can write proper English, which is simply because that culture doesn't exist. Very few universities in Pakistan offer English writing and presentation skill. That is essential. So when you write to a professor, write them with their dear professor this, and never misspell their name. Write down their name with spelling and do some homework and say you are interested in working with them. Don't say I need admission. For admission, you just apply admission. You don't need a professor. The idea of talking to a professor is so that professor can become interested in you, and he or she can exert some influence on the admission process. Typically, the admission process is like this. You apply for online admission, you provide all the documents, your transcript, your GRE, your English scores, and different universities have different requirements. You can look up their website. Don't ask the professor, what is the requirement? Don't ask the professor what is given on the website, you know. Whatever, search the website, talk to the professor, and try to build up a relationship based on research. Read some of their paper and say, sir, I'm very interested in this. I have this good grade point average. Don't exaggerate, be honest. And if you have a little bit lower GPA, then don't mention it. Mention your good points and say you are very interested in working with them. You are interested in having them as advisor. You want to be their PhD student, master student, and things like that. So write to professor. Okay, if you are interested in one department and one professor does not reply, then send them an email again. Emails can go through without
answers. It's very common. So if the professor doesn't reply, remind him after maybe 1 or 2 weeks. It doesn't hurt. Say, sir, I wrote to you. Don't say you didn't reply. That's like complaining. Say that I wrote to you and I am very interested. So I would like to reiterate your interest because you are very interested. So instead of complaining you didn't reply, just say that because I'm very interested, I am writing to you again. Again, if the professor doesn't reply, then write to another professor in the same department. The reason is professors are always looking for good students, always. And students are always looking for good professors. So how do we bring a thirsty person to the water well? We cannot take the water well to the thirsty person. We just have to bring the thirsty person closer to the well. So it will be your responsibility to seek out good professors and communicate with them. If one doesn't answer, then try another. Don't try many professors at the same time because sometimes they talk to each other. And if you're sending a mass email like hello, hi, without name, it will receive less attention. And that means you are spamming people. So write down individually and make that connection and then say you are interested. That's one thing. Number 2 thing is never say, sir, give me scholarship. It's obvious when you are admitted for higher education, especially in PhD, master's level scholarships are less likely. PhD levels are scholarship like teaching assistantship or research assistantship is almost 99% guaranteed. But universities don't say it is guaranteed. The reason is then it becomes a legal obligation. So they will never say, oh, we give you guarantee that this will be sure. Oh, yeah, sure. Then it becomes a legal liability. So they will not say that. All students in most universities are eligible if they are PhD student. I think like 1 in 5 in 1,000 people who are doing PhD, they will be without support. So then they shouldn't be staying at that university. They can apply to another university. They can transfer. So teaching or research assistantship is almost 99% sure once you are a student, once you are admitted. So ask for admission and interest in working, not ask for, sir, give me scholarship. This is a point which I want to emphasize again and again. And sometimes I even receive emails, sir, can you also provide scholarship for my brother? Sir, I come from very poor family. Sir, please help me. Sir, my parents are very poor. Okay, so universities professors do not have funds to support poor people, even though I would like to, and I do that outside the university, but not through official channels. The purpose of the university is to recruit students. Another point I want to emphasize is that providing teaching or research assistantship is not an obligation, it's an award. Award means you may get it or you may not get it. But as I said, most of the time you get it, because without financial support, it is very difficult to pursue PhD. But it's not an employment and it's not like automatic thing. Therefore, you should view it as an award, because after all, students come to universities, they earn degrees. So in principle, they should pay for tuition. But universities provide assistantship or scholarships or teaching assistantship or research assistantship or other kinds of fellowships to students because they want PhD students to help them do research. So professors have these funds and they are looking for good students. So it's a matchmaking, but it's not something which is automatic or guaranteed. So I hope I am explaining it very well. So with that, if they
let's say, then the professor say, okay, please send your transcript or the list of courses, and you have some poor grades. So be honest about it. Say that, for example, you shouldn't say, oh, if a professor says, did you have a C or D grade? And if you say, I don't remember, so that's false, because your transcript will say it. So always be honest and say, yes, sir, I had, and at that time I wasn't doing very well. Maybe I have personal problems, but look, see, I improved later in later years. So I made a huge improvement. And then I just, I know my weakness, so I work on improving those weaknesses. So have a very positive and honest opinion about if something is missing. And don't say, can the GRE be waived? Okay, so GRE requirement may be waived if the university can waive, but it's not up to the professor. Typically, there's a committee or there's an admission office. It checks all those things. If the student has provided, the applicant has provided all the requirements. If they have not, then it's not possible for the professor to get that waive based on personal influence. So GRE English requirements, they are also for your own interest, and they are required. Also, as a backup plan, you should apply to more than one university. There's nothing wrong with that, because what if the professor doesn't offer you? Then you are not going to waste your time. At the end, you should have more than one offer, and then you can choose. But then when you choose, don't make a selection based on if scholarship is higher, because scholarship higher or lower is a very misleading things. Many different places, like in California, the cost of living will be very high, whereas in Texas, it will be low. So even if scholarship is higher, you cannot just base your decision based on scholarship. See where you will get higher quality education, where the professor will be more supportive of you, and make your selection based on that. But be honest, don't be deceptive. If 2 or 3 professors offer you, then you let the other professor know, sorry, sir, I have selected another universities. Thank you very much. And stay honest throughout, always, about everything. So now, the question is master's or PhD. So the universities which are tier 1 or tier 2, they love PhD students. Master's students typically come here, they get master's, they get a job, and that's fine. There's nothing wrong with that. But if you're a master's student, the chances of scholarship or teaching assistantship or research assistantship is very low. So if it is a master's level universities, then maybe they will offer you something. If it is a PhD level university, then almost all PhD students get priority. So if you are a master's student, then chances are basically very low. You can try if that's what you want to do in your life. Not everybody wants to do PhD, and that's fine. But it's worth doing it. Higher education never goes waste. Any degree, any hard work never goes waste. Never. So should I do PhD or not? Is it worth doing it? It is always worth doing it. I have never met anybody in my life who did a PhD and said, oh, I shouldn't have done it. But if your plan is just to do master's and you are not research oriented, you don't want to do PhD, that's fine too. There's nothing wrong with that. Everybody has their own temperament, but you have to see what you like doing. And the research area is also what you like doing. But many times students don't have a real idea about the research area. Everybody wants to do AI now. And that's fine, but we don't want to just keep on training
making every student train another neural network or machine learning technique and then get PhD. It has to be meaningful research area. Also, the research areas, your advisor is in a better position to guide you, advise you, and you should be open to that, because research areas are something which is very hot today. The question is, will it be hot after 4 or 5 years when you graduate? That is more important, because after you finish your PhD, you want to get into academic career or industry. In the US, industry and universities both do research. So Dr. Zafar Shahid is doing very high quality research. Same thing in Google, Microsoft, American environment. Research is done at universities, industry, and national labs. There are so many national labs which are funded by government, and they do hardcore research. So it doesn't matter, but in order to go to any of these three, after finish your PhD, you need a PhD from a university first. After finishing your PhD, you can join a university or industry or a national laboratory. Typically, industry pays more, but universities have the benefit of freedom and job security, and you can do whatever you want. In industry, you have to do what your company tells you. So these are questions which can arise later. So let me see if there is another good client I wanted to tell you. Yeah, I think that's about it. There are so many things I want to say, but I want to have this very frank discussion with all of you. So I will stop here and give you all of you to ask me very frank questions, and I will be very glad to. Thank you very much, so sir, for all your nice words and advices. So all the people who have questions, please raise your hands and then we can ask one by one. Yeah, this is your opportunity to basically ask anything, and I'll be glad to. Yes, Asim Zahid. Can you introduce yourself first? Yes, sure. Thank you for the opportunity of speaking. I loved your talk. It is really helpful. Let me introduce myself. I just graduated in computer sciences, bachelor's in computer sciences, and my final year project was on a 3D soccer ball trajectory estimation. It is a industry academia collaboration based project, and research oriented industry academia collaborated project on a real time soccer analytics based project. Very nice. And inshallah, by the end of the year, we'll be publishing 2 papers. One of the data set we have created, the custom data set, and the second on object detection. And we will see if we could cover the tracking section also. Very good. Currently, currently I'm working as research scientist in a company which works on cybersecurity, AI, and data mining. They have a product and which helps clients to in better operating the SOCs and this security operation centers. Like we are trying to redundant the lowest level of hackers or the cybersecurity analysts. So we are trying to redundant those, like automating them and helping them and facilitating them in doing better things and optimizing them. Yeah. So which something university, like Asim, which university did you graduate from? So I graduated from Superior University, and I'm sorry, which one? Superior University. Okay. So one thing I also should add, I think so. Our supervisor is Dr. Irfan Jafar. He is also the dean. So with him and with the industry, I have completed my
final year project. So my question is, should I go towards the What is the question? What is the question? Yeah, the question is, like I have completed my my final year project and the research side in computer vision side, in the area of computer vision domain, and now I am working on cybersecurity like things. So inshallah, I will be applying in next 1 or 2 years for the masters leading towards PhD. And the rough idea is like this, something I have in mind at this moment. I will be applying for masters leading towards PhD. So in this scenario, I have papers in computer vision, then working. So I think what is the question? There are other hands. Yeah. So is it उर्दू में बात करना तो पुराना कर लें बल्कि उर्दू में ही सारे बात करें सर, इसलिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है उसमें, लेकिन आप लोग उर्दू बोल सकते हैं सर, के पंजाबी में कर सकते हैं। करें या सो कंप्यूटर विजन में मैंने किया, अब इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी भी कर रहा हूँ, तो क्या ये इफेक्ट करेगा ऑन माय अप्लाइंग टुवर्ड्स इनटू यूनिवर्सिटीज के भाई वो डोमेन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, क्या तरह का पॉसिबल होता है? नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अभी आपने बैचलर्स किया, अभी तो बहुत आगे सफर है, तो आपने मोर देन वन रिसर्च एरिया की हो तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसमें मिशन के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो होगी आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज, GRE और अदर थिंग। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं करेगा, और अगर आपने दोनों चीजों पे काम किया, दोनों चीजों पे कर लें। अगर आप किसी प्रोफेसर के साथ काम करना चाह रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर विजन वगैरह सारे करते हैं, यार ये आजकल ये डजंट मैटर कि कौन सा प्रोफेसर क्या कर रहा है, सारे प्रोफेसर सब कुछ ही करते हैं। तो ओल्ड टाइम में एरियाज होते थे, तो अगर आप किसी को लिखेंगे तो उनको, या तो अगर उनके पेपर हैं कंप्यूटर विजन पे तो उनसे कह देंगे जी आपको कंप्यूटर विजन में इंटरेस्ट है। अगर उनके पेपर ज्यादा साइबर सिक्योरिटी है तो आप कहें जी मुझे साइबर सिक्योरिटी है। अगर आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में तो आप पहले प्रोफेसर ही वही फाइंड करें जो साइबर सिक्योरिटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं ना होगा। सही। और सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या मास्टर्स लीडिंग टुवर्ड्स PhD में स्कॉलरशिप मिल जाती है? जैसे आपने बताया कि यूजुअली मास्टर्स में कम होती है स्कॉलरशिप एंड PhD। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें चक्कर ये है ना कि मास्टर लीडिंग टू PhD ना, वो अगर अक्सर यूनिवर्सिटियां करती है डायरेक्ट PhD। तो अगर आपने वाकई PhD करनी है तो डायरेक्ट PhD करें, तो वो उनके चांसेस आपके ज्यादा हैं स्कॉलरशिप के। मास्टर लीडिंग टू PhD का मतलब पहले अगर आप मास्टर्स करें स्कॉलरशिप लेके तो फिर आप भाग जाएं इंडस्ट्री में, तो फिर यूनिवर्सिटीज विल से कि भाई नहीं, तो उसमें जब आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा तो वो सारा कुछ कंसिडर होगा ना। तो अब UT आर्लिंगटन ऑफर करती है डायरेक्ट PhD, तो उसमें डायरेक्ट PhD में यू आर कमिंग वेरी फोर्सफुली कि जी मैंने तो करनी PhD, तो फिर मास्टर्स का कोई फायदा नहीं रहता। तो बट अब कई यूनिवर्सिटियों में मास्टर लीडिंग टू PhD भी होता है, तो वो देख लें। अगर वो आप उनसे बात कर लेना कि कहाँ उनके चेक करें कि अगर आप मास्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि जी मैं PhD जरूर करूंगा तो मुझे भी स्कॉलरशिप देना, तो वो तो नहीं ना कोई उसमें कोई क्रेडिबिलिटी कम है ना। बट मे बी सम यूनिवर्सिटीज हैव दोज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो यू कैन ट्राई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट PhD में यू हैव द हाईएस्ट चांस। ठीक है। सो बेहतर ये है कि हम मास्टर्स जो है लेट्स से पाकिस्तान से करें, एंड या फिर मास्टर्स करने की जरूरत भी नहीं है क्या? मास्टर करने की जरूरत ही नहीं है, या मास्टर पाकिस्तान से भी कर लें वो भी ठीक है, लेकिन उधर से जाके डायरेक्ट PhD कर लें वो बेहतर है। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन प्लीज। मुआज। Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Zafar. Thank you, sir. Ishfaq. Sir, do you have to introduce myself? Please, quickly. Okay, thanks. Yeah, thanks, sir. Sir, I graduated in BS Computer Science in 2017 and currently working in the industry as a full stack web applications From and where? DevOps Which engineer. university? Bhaijan, kaun si? CompSurge University. Achha, Lahore. Okay. Okay, sir. So you have already partially answered my question. So
my question was that how, as a BS graduate student, can I apply for PhD as they are looking for students who have already have masters or unki publications ho. So what is my chance for, not my chance, like students like me, what is the chance of their getting acceptance at PhD in US? And I have second question that mostly in Europe we have Marie Curie Actions fellowship that is like mostly like industrial research जिसमें कि आपको चांस होता है कि आप बल्कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि यू वर्क इन इंडस्ट्री एंड यू आल्सो गेट योर पीएचडी डिग्री सो बट उसमें ये होता है कि आपका रिसर्च होता है सो is this any kind of research or fellowship available in the US also? So first question is bachelor's degree to PhD. It will all depend कि आपके grade क्या हैं, GRE और वो क्या है और आपने कितना actively pursue करते हैं. If somebody has done masters and have publications, then they have better chances of admission. But then if you have a bachelor's, it's better to go to US with direct PhD rather than first spend 2-3 years to do masters here and then do publications. So it all depends on your grades and how actively you pursue it. Okay, you can do masters there, but has to be in a good university, and the publication is another game, which needs another talk. Publications, just having publication doesn't mean anything. Just finding a conference somewhere in Sri Lanka, which has no recognition, it's not going to help. This is what all the professors, not all, but many people in Pakistani universities are doing. They are publishing, which is very meaningless. China abandoned that practice many years ago with the very tough standards. They use an iron hand that if you play a publication game by publishing, it doesn't matter. It's like cricket. Okay, it's like scoring centuries against local clubs versus scoring century against Australia or England. Now, of course, you have to start from somewhere, and it should be encouraged. But that's just a starting point. So it doesn't hurt to have publication, but it is better to have good publications in a decent conference, especially by IEEE, ACM, etc. Still, having publication is better than not having publications. But if you have the opportunity to go for higher studies, go quickly. Okay, answer 2 question. Europe has this Marie Curie scholarship. I don't know. I mean, the whole Europe or some country. Europe is very big. It's a Europe-wide scholarship. Yes, actually, it's offered by Marie Curie organization in different universities in all over the Europe. Yeah. So, how many scholarships do they have? They have, I think, 1,700, 2,000 in I think in all, not limited to computer science. Yeah, so that seems something very attractive. But most important thing is, it's the university where you go to. The university, your degree should have a value rather than Marie Curie scholarship. Sir, actually, my question was, personally, I like to be in industry. So do they have such opportunity that we work in industry while doing PhD? So practical knowledge. Yes. So I don't know exactly how Marie Curie scholarship works, but the way things work in the US is that you have to get your degree from the university. Industry cannot give you a degree, and you cannot just work in industry and get a degree. So the way it works in the US is that you are a student, and during summers, you can do internships. So for example, every summer I send 2 or 3 students to industry
Facebook, Intel, Google, Microsoft, Apple. So you go there, you spend the summer, and actually they can pay you stipend, but then you come back to the university. So this is how it works in the US. It's not conceivable that you are working in industry and then you are getting PhD. I don't know how is that even possible, because PhD has to be a granting universities and you have to spend certain amount of time and credit hours. You can spend some time in industry, but spending entire time in industry and getting a PhD based on the industry alone, I don't think that will work. So how Marie Curie scholarship works, I do not know. But in the US, the सर अगर मुझे चांस दे तो मैं कमेंट ऐड कर दूं प्लीज, अगर माइंड ना करे कोई तो। जी कौन सा? सर मैं मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ, अगर कहें तो मैं कमेंट कर देता हूँ मेरी क्यूरी पे भी और ये इंडस्ट्रियल। डॉक्टर ताहिर आपने आपको प्लीज इंट्रोड्यूस करवा दें। जी जरूर करें। सर मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैंने पीएचडी की इंपीरियल कॉलेज लंदन से और मैं यहाँ कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप रेगुलर फैकल्टी में नहीं है, बल्कि आप पोस्ट डॉक, करेक्ट? जी सर मैं रिसर्च स्टाफ में हूँ। हाँ जी ठीक है। सर जो बेसिकली ये कह रहे हैं यूरोपियन स्कॉलरशिप का, वो ऐसे ही है सेम जैसे हमारे पास यहाँ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, वहाँ बच्चे जा सकते हैं और वो स्कॉलरशिप इक्वली अचीव कर सकते हैं। वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए इक्वल है, तमाम प्रोफेसर्स के लिए इक्वल है, वो लिमिटेड नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से या किसी प्रोफेसर से। तो जिसको मैरी क्यूरी मिलता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ एडमिशन सिक्योर करेगा, किसी भी प्रोफेसर के साथ XYZ वो काम कर सकता है। ये एक चीज तो हो गई क्लियर कि स्कॉलरशिप का किसी चीज से कोई कनेक्शन या ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात आ जाती है इंडस्ट्रियल कनेक्शन। तो सर गूगल भी स्कॉलरशिप देता है, IBM भी देता है, इंटेल भी देता है, लेकिन मुझसे आप बेहतर कमेंट कर सकेंगे, मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जो प्रोफेसर फंडिंग लेते हैं इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में PhD करते हैं किसी प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होके, उनके प्रोजेक्ट इंडीड फंडेड और कंडक्टेड होते हैं US या यूरोप की नेशनल लैब से भी और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर से भी, जैसे IBM है, इंटेल है, गूगल है, फेसबुक है। तो वो जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होते हैं प्रोफेसर्स के साथ, उनके थ्रू कोई भी स्टूडेंट उस IBM की फंडेड रिसर्च पे काम कर सकता है और वो ऑलमोस्ट 90+% फिर IBM की जॉब भी होती है। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन वो कह रहे थे कि इंडस्ट्री में रह के तो नहीं ना काम होता, ज्यादा तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना पड़ता है ना। जी सर मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं एक ट्रैक दे रहा था, एक्चुअली सिर्फ ये ट्रैक है, डायरेक्ट कोई ट्रैक नहीं है। डायरेक्ट ये है कि आप पहले जॉब ले ले, फिर उनके इंटरनल जैसे कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करती है, वो फंडिंग लेके भी लोग सम टाइम PhD कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है तो। दैट इज वेरी ट्रू। इस तरह के मेरे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इंडस्ट्री के साथ हुए, ये भी है अपॉर्चुनिटी। Sorry sir, I could not explain it. जो सर ताहिर ने कहा, I was actually trying to say this. I couldn't explain it better. Thank you sir. हाँ, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, and you should explore. US में भी है, लेकिन मैरी क्यूरी जो पूरा उन्होंने को मेरा ख्याल इंडस्ट्री कंसोर्टियम होगा, उन्होंने इकट्ठा उसको फंड किया होगा। इधर इंडिविजुअल कंपनी से इस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं। नेशनल लेवल पे इस तरह का फंड मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई है तो मुझे बताएं। सर मैरी क्यूरी भी डायरेक्ट इंडस्ट्रियल नहीं है, वो फुल ब्राइट है सिंपली। वो एक कंट्री या पूरे यूरोप कंट्री, मतलब वो 20 to 30 सारी स्टेट्स का एक कोलैबोरेटिव, जैसे यूरोपीय यूनियन का फंडेड प्रोजेक्ट। वो क्लीन है इस बात से कि इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोफेसर कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है। वो दूसरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो उसका हिस्सा है, आप इंडस्ट्री बन सकते हैं किसी प्रोफेसर के थ्रू। मैरी क्यूरी का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। हाँ, मैरी क्यूरी को इंडस्ट्री फाइनेंस करती हो वो एक अलग इशू है। राइट, ठीक जी। नेक्स्ट So Dr. Najeed is next. So Dr. Najeed, welcome to this webinar. So Dr. Najeed in NED. So sir, please go ahead and introduce yourself and. Yes sir. Assalamualaikum. Dr. Najeed, I am here at associate professor. जी आप ब्रेक हो रहे हैं, आप वेबकैम ऑफ कर दें। And I did my PhD from University
University of Leeds in 2011. Ji, My I cannot hear you. Please repeat. सर मेरी रिपीट आवाज कर दीजिए क्वेश्चन. एक सेकंड में जरा सा थोड़ा सा अपना सिग्नल तो देखूं कि ये बताइएगा आवाज आ रही है मेरी. हाँ जी, आवाज बिल्कुल आ रही है. अब बेहतर ही. अच्छा, सॉरी. अच्छा, एक्चुअली आई एम डॉक्टर नजीब and associate professor at NED University of Engineering and Technology, Karachi here, heading a center for software research and development that is established under the Ministry of Science and Technology. Actually मेरा क्वेश्चन तो नहीं बल्कि ये कि थोड़ा सा कमेंट मैं डॉक्टर साहब से लेना चाहूँगा कि ऐसी आपने कहा कि कुछ अर्से पहले कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का डेफिनेटली स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उनकी रिकग्निशन नहीं है. एग्री, बिल्कुल 100% एग्री. आई थिंक वेरी सून अंडर HEC जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक वाशिंगटन एकॉर्ड को जो है वो साइन किया है और आजकल जो है वो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर खास तौर के ऊपर OBE सिस्टम जो कि कहलाता है शायद आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी उसको फॉलो कर रही हैं. डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि उस पर कमेंट करेंगे कि इस वाशिंगटन एकॉर्ड को साइन करने से और जो हमारा स्टूडेंट अब यहाँ से ग्रेजुएट होगा क्या उसकी वर्थ इंटरनेशनली कुछ बढ़ जाएगी या ये सब कुछ जो है वो सिर्फ एक साइनिंग और उसके पीछे जो है वो एक लेबर वर्क हो रहा है यहाँ पर और इसका आउटकम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे स्टूडेंट्स को या होगा? इसके ऊपर डॉक्टर साहब की मुझे जरा राय अगर चाहिए थी. Yeah, without knowing the details, I cannot comment on it. There could be some good thing, but इस तरह के रिकॉर्ड तो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ रिकॉर्ड ही होते हैं. तो रिकॉर्ड में भी वो लोग जो है वो पता नहीं वो क्या लोग होते हैं, मुझे डिटेल का नहीं पता, तो आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट. लेकिन रिकॉर्ड साइन इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन इज के इनसाइड व्हाट इज इनसाइड द रिकॉर्ड, उसके क्या बेनिफिट वो क्या लेबर वर्क बहुत बढ़ गया है. अंडर वाशिंगटन एकॉर्ड जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो अब आप इस तरह का बनाएंगे 10 क्वेश्चन में जो व्हाट अगर क्वेश्चन होगा तो उसके मीनिंग क्या होंगे, वाई के क्वेश्चन के मीनिंग क्या होंगे और इस तरह की चीजें. एक तरीके से ऐसा लगता है कि टीचिंग को बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है और जबकि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो तो ऑलमोस्ट वही है जो पहले था उसका. वो अभी 10 में से 5 सवाल या 8 में से 5 सवाल करने की बात करता है, लेकिन वैसे इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा टास्क वो लेबर वर्क हो रहा है, टीचर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो मेरी यही बात थी, लेकिन आपने कहा कि जाहिर है कि आपकी ज्यादा नोइंग नहीं है इसलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने जो ये वाशिंगटन एकॉर्ड साइन करके एक इतना बर्डन भी बढ़ा रही है तो क्या इसका आउटकम कुछ होगा या नहीं होगा? बट आपने कहा नहीं, रिकॉर्ड साइन करने से कुछ नहीं होता. क्वेश्चन इज के रिकॉर्ड के अंदर है क्या, करेक्ट? तो उसके जो कंटेंट में क्या है. लेकिन यूनिवर्सिटीज के जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की एवेलुएशन, असेसमेंट, एक्रेडिटेशन होती है वो स्टैंडर्ड बॉडी जो है वो ABET है, ABET. वाशिंगटन एकॉर्ड का मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर है क्या. तो वो ये किसी ने कुछ कहा होगा. अब मुसीबत ये ना कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बंदे एडवाइस कर रहे हैं वो खुद भी कोई क्वालिफाइड वगैरह नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है. मुसीबत यही है ना. Exactly. उनकी जो एडवाइजरी जो उनका डोमेन होता है वो अब देखे ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं तो उनको हायर एजुकेशन में बताया जाए. जिस तरह वो बनाया हुआ था नजम सेठी, उसको कोई क्रिकेट का पता नहीं था वो जब एडमिनिस्ट्रेटर बन गया तो देन ही बिकेम सेल्फ प्रोक्लेम्ड. वो उसको पूछे तो लगेगा कि इसको इससे ज्यादा क्रिकेट का किसी और को नहीं पता. बट दैट्स लाइक ए नॉन एक्सपर्ट. चाइना और इस तरह की यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट के अंदर जो सारी पॉलिसीज होती हैं दे आर मेड बाय एजुकेशन एक्सपर्ट्स, नॉट जो ऐसे सेल्फ क्लेम्ड हो. अब क्रिकेट का जो एक्सपर्ट है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट है ना. हायर एजुकेशन का जो एक्सपर्ट है वो हायर एजुकेशन का एक्सपर्ट है. अब क्रिकेट के एक्सपर्ट जो है उसको आप हायर एजुकेशन सिखाना शुरू कर दें और हायर एजुकेशन वाले को क्रिकेट सिखाना शुरू कर दें तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सो आई डोंट हैव ये चीज कब चेंज आ जाएगा? अल्लाह करे कि आ जाए कुछ चेंज. हम हर गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं. अल्लाह करे नहीं आएगा. हाई लेवल के ऊपर इस तरह के चेंजेस आ जाए. ये तो हम जब से बचपन ये अल्लाह करे वाला जो चक्कर है ना, ये जरा इसको ध्यान से वॉच करें. ये कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अल्लाह डजंट हेल्प
Allah doesn't bring wrongdoings. It is the people who brings wrongdoing to themselves. تو پریکٹیکل کام ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہوتا تھا, حالانکہ وہ خدا کے نبی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ہیلپ تھی, لیکن وہ پھر بھی پلاننگ ایسے کرتے تھے جیسے اللہ کی ہیلپ موجود نہیں ہے, سارا کچھ ان کو خود ہی کرنا پڑے گا. تو پریکٹیکل جو ہوتا ہے نا, وہ اللہ کرے, وہ جو ہے نا, وہ اس کے اوپر رائے کرنا کہ اللہ کرے گا جب لوگ خود کچھ نہیں کر رہے, وہ دیٹس اے فیلسی. تو ایک اور ویبینار میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ظفر شاہد سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس کا صرف میں تھوڑا سا بتا دوں تو ایک اور ویبینار ہونا چاہیے. ڈاکٹر ظفر. بالکل سر, وی آر آلویز دیئر. ہاں, وہ دوسرا ٹائم ہو. جی, تو دوسرا انشاءاللہ میں نے تو میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں اور میں ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں اسلام کا, لیکن میں نے ابھی ایک بک لکھی ہے اور وہ انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی ویری سون. میں اس کو پبلشر ڈھونڈ رہا ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کتاب, بہت یونیک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے, قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن. سب بایوگرافیز جو ریسنٹلی لکھی گئی ہیں ان سے میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہو, اور ان کی 100 انسانی خوبیاں لکھی ہیں. تو کتاب کا ٹائٹل ہے دی پرفیکٹ ہیومن, تو انگلش میں ہے, تو میں اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. ہر بندے کا اپنا اپنا ریلیجس رجحان ہے, لیکن پوری ورلڈ اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ایتھیسٹ بن رہی ہے, یا ان کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہے ان کو ریلیجس میں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ مولویوں کو رول ماڈل دیکھ کے اور ان کے عجیب و غریب ان کے جو انہوں نے پرنسپل اپلائی کیے ہیں, آپس میں فرقہ بازی لڑ کے, 2 ملاؤں میں مرغی حرام, میوزک حرام, فلانی چیزیں حرام, عورتوں کو سپریس کرنا, سائنس ٹیکنالوجی کو نہ ماننا. تو اس وجہ سے ہمارا مسلم ورلڈ جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. تو بک لکھی ہے وہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر لکھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ان کی جو تعلیم تھی اور جو قرآن کی تعلیم ہے وہ ایکچولی فارورڈ لکنگ ہے. وہ سب نالج اور ہائر ایجوکیشن اور علم کے اوپر اس کو اسلام ایمفسائز کرتا ہے, اور اسلام ایک کامن سینس کا ریلیجن ہے. تو میں اس کی بک جو ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے. ڈاکٹر ظفر شاہد کو تھوڑے میں پیس بھیجتا رہتا ہوں, وہ شاید ایک آدھ ورڈ کہہ دیں اگر وہ چاہیں تو اردو میں بھی وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے بک. اس کا ٹائٹل ہے بشر کامل, تو وہ انشاءاللہ 1 مہینے تک ہم پبلش کروا دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ پڑھے, اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دین جو ہے کتنا براڈ مائنڈیڈ ہے, بیکورڈ نہیں ہے ہمارا دین. ہمارا دین بہت براڈ مائنڈیڈ ہے اور براڈ فارورڈ لکنگ ہے. جو ویسٹرن ورلڈ, امریکہ, یورپ, انہوں نے جو پرنسپل سارے, جاپان, انہوں نے یہ جو سارے پرنسپل ہیں وہ ہمارے اسلام کے روشن ہمارے پرنسپلز ہیں. وہ ہم بھول گئے ہیں, اور ہم چھوٹی چیزوں میں مولویوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. سارے مولوی برے نہیں ہیں, لیکن اکثر مولویوں نے یہ فرقہ بازی اور ایک دوسرے کے اوپر عجیب و غریب چیزیں کہہ کے نئی پود کو عجیب انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. تو وہ بک کا کسی وقت آپ کو انٹروڈکشن دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر ظفر, آپ کو تھوڑے سے پیسز ملتے ہیں, آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, آپ نے پڑھے؟ بالکل جی, میں کہہ سکتا ہوں. تو جب میں وہ پیسز دیکھتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو یہ بندہ جو رائٹر ہے ان پیسز کا, اس کی کافی زیادہ گرپ ہے ریلیجیس اسٹڈیز پہ, اور مجھے بالکل فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کمپیوٹر سائنس کا سائنٹسٹ لکھتا ہے. تو دیٹ از another personality. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے پیچھے ڈاکٹر اشفاق نے 2-3 کاپیز اپنی رکھی ہوئی ہیں, کیا کہتے ہیں, جو پیرلل میں کام کرتے ہیں, because that is quite orthogonal to what he is talking today. تو ماشاءاللہ ان کی کمپیوٹر سائنس میں بھی اتنی اکمپلشمنٹس ہیں, تو ان کے ساتھ ریلیجن کو بیلنس رکھنا یہ مشکل کام ہے کافی. تو بالکل سر ہم اس پہ کریں گے. جی ضرور. تو انشاءاللہ دیکھیں نا, ہمارا جو اسلام ہے نا وہ اتنا کامن سینس کا ریلیجن ہے, اور اس کے اندر 100% ٹروتھ ہے. اور قرآن جو ہے اس سے دنیا کی ساری بک لیں, آپ ملا لیں, آپ قرآن سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے.
اب یہ مولویوں والی باتیں ہیں, ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ جی چھوڑیں جی کیا باتیں کر رہے ہیں کیسے, وہ اس لیے نا کہ انہوں نے پڑھا نہیں, تو تعلیم کی کمی بہت ہو گئی. ہمارا ادھر جو ہے نا ریلیجن ایسے امپوز کیا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں کو بندے کو پھائے لگانے کے لیے ہے. تو اسلام قرآن پڑھیں آپ تو اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹیز دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو علم اور ترقی اور اوپن مائنڈ اور ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آتے ہیں ہم کسی بھی روح کو اس کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ تنگ نہیں کرتے. اتنی بڑی آیت ہے کہ بندہ سوچتا ہے تو کہتا ہے یار حیران ہے خدا کی قسم کہ اتنا زیادہ ڈیپتھ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وائز لکھنی. اور وہ قرآن کو پڑھتے نہیں, ہم تو صرف اس کو چومتے ہیں, یا وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے قرآن خوانی کراتے ہیں, وہ بھی کرائے کے مولوی بلا کر. چلیں سر نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. تو میں مجھے نہ سٹارٹ کروں گا, پھر رکوں گا نہیں. صحیح ہے جی. وقار آپ کا کیا کوشچن ہے پلیز؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام وقار ہے اور میں جی بھائی جان آواز نہیں آ رہی سر, آپ کا مائکرو فون صحیح نہیں. جی سر آواز کلیئر ہو رہی ہے؟ ہاں اب تھوڑی سی آ رہی ہے. تھوڑی سی ہے سر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بیسیکلی میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی. میں نے اپنا ماسٹر ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے فزی لاجکس میں. اچھا. تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا جو ہے نا وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا, تو اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن ہے؟ جی جی ماشاء اللہ. یار میتھمیٹکس جو ہے نا وہ ہے, میتھمیٹکس از کالڈ دی مدر آف سائنس. تو آپ کی تو ماشاء اللہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, تو اس میں یہ ویکنس نہیں ہونی چاہیے. آپ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. آپ کا صرف یہ ہوگا کہ آپ اپلائی کریں گے مثلا یو ٹی آرلنگٹن میں کریں گے, تو آپ کی تھوڑی بیک گراؤنڈ فل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے پری ریکوزٹ کورسز دے دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کا تو ماشاء اللہ نالج باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا. میتھمیٹکس میں کمپیوٹر سائنس کا ہمارا جو کریکولم ہے پاکستان میں وہ بہت ویک ہے میتھمیٹکس میں. تو آپ نے اگر میتھمیٹکس میں کی اوپر سے آپ فزی لاجک اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے جی فزی لاجک کو یوز کرتے ہوئے کووڈ-19 کے ڈیٹا کو کولیبوریٹ کیا. ماشاء اللہ ویری گڈ. تو آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ بالکل ضرور کریں, میں آپ کو انکریج کروں گا. اچھا وقار, اس میں میں کمنٹ دے دوں کہ ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ کو جو کہ میتھمیٹکس میں ماسٹر ہے فلی فنڈڈ پی ایچ ڈی ملی ہے کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی سے, اور وہ کمپیوٹر سائنس میں ملی ہے, ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ میں. تو اگر آپ ہائی کوڈ گرو کے سلیک پہ ایکٹیو ہوں تو آپ کو اوبیسلی گائیڈنس مل جائے گی وہاں پہ. تو ہم بڑی پریورٹی دیتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ایکچولی گائیڈنس کے لیے دیکھ رہے ہیں. جی میں انشاءاللہ سر ضرور کروں گا. جی میں آپ کو بہت زیادہ انکریج کروں گا وقار, آپ ضرور کریں. تو تھوڑی سی انیشیل آپ کو وہ بیک گراؤنڈ کورسز کی ضرورت پڑے گی, اس کے علاوہ تو ماشاءاللہ آپ اس کے بعد آپ بالکل آگے رواں ہو جائیں گے. جی سر, یہ ہمارے فیس بک پیج پہ کپل آف کوشچنز ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں جو ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں وہ کون سی ہیں یو ایس میں؟ کون سے سبجیکٹ میں؟ الیکٹرانکس یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں. اچھا تو کون سی؟ ہاں ٹاپ 3 یونیورسٹیز, وہ تو پھر الیکٹریکل انجینئرنگ کا ہوگا نا, کمپیوٹر انجینئرنگ. ہاں وہ بھی ٹاپ 3 یونیورسٹی تو یار ہیں اسٹینفورڈ, ایم آئی ٹی, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ریٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے, وہ یا تو ہوگی ایلینوائے ہوگی, یونیورسٹی آف ایلینوائے, اربانا شمپین ہوگی, یا کارنیگی میلن ہوگی, یو سی برکلی ہو سکتی ہے. یس سر, ییل کارنل برکلے وغیرہ ہو سکتی ہیں, ییل کارنل برکلے ہو سکتی ہیں. کون سی ویب سائٹ سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے؟ یار بہت ویب سائٹ ہیں, یہ ان کی جو اوور آل رینکنگ جو ہے نا کامن سینس رینکنگ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ایک اور رینکنگ ہے یو ایس نیوز
क्या उसका नाम है, यूएस न्यूज मैगजीन है, वो उसकी रैंकिंग ज्यादा पेरेंट्स वगैरह वही पढ़ते हैं। सही। यूएस रिपोर्ट एंड यूएस न्यूज एंड क्या उसकी रैंकिंग है यार, एक मिनट में और गूगल सर द टाइम्स हायर एजुकेशन वाली भी ऑथेंटिक होती है, वो भी यूएस की है। सही। यूएस न्यूज कॉलेज रैंकिंग गूगल करें ना, बेस्ट कॉलेजेस, वो जरा ज्यादा लोग मानते हैं। लेकिन मतलब मैंने आपको कहा ना, एक ये रैंकिंग जो है ना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। नंबर की जो रैंकिंग है ना, उसको करना बड़ा मुश्किल है। जो बैंड की रैंकिंग है ना, यानी कि ग्रुप की, कि ये टियर 1 है, ये टियर 2 है, ये टॉप 10 है, टॉप 20। टॉप 10 का मतलब है उससे सिर्फ टॉप 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 यूनिवर्सिटी नहीं होगी, बल्कि उधर कोई 20-25 यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि टॉप 10 के ग्रुप में आएंगी, ये मतलब है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट से आप कह रहे हैं कि टॉप 50 कह लें या टॉप 100 कह लें, वो भी एक रैंकिंग हो सकती है। इंडिविजुअल 1 2 3 जो है रैंकिंग जो है ना, वो करना बड़ा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यासिर जी। जी। यासिर, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I've recently graduated from, I recently did computer science from Muhammad Ali Jinnah University, Karachi. जी, And my final year project was on natural language processing and on semantic search on Quran. And also सिमेंटिक the सर्च और कुरान। Yes, sir. यार आप फिर मेरे साथ ही आ जाएं, इधर मेरे साथ ही पीएचडी करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखें ना, ये आइडिया जो है ना, ये देखें इंडिविजुअल टैलेंट की बेस पे। आपने पब्लिश कहाँ किया पेपर? Sir, actually, I'm in the process of publication. So, inshallah, I have worked with the supervisor, Dr. Tafsir Ahmad Khan. So, I'm in the process of publication. Inshallah, we will be publishing soon. हाँ So, जी, sir, I've heard that those who need a scholarship are actually like not prioritized over those who do not need the scholarship. Is that true? नो दैट इज नॉट ट्रू। मैंने कहा ना, स्कॉलरशिप जो है ना, ये ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट है अगर आपका एडमिशन हो पीएचडी, ऑलमोस्ट। बट सम यूनिवर्सिटीज में ट्राई टू गेट यू विदाउट स्कॉलरशिप, सो देन अच्छा, व्हाई वुड इसमें यू? बिल्कुल। सो यासिर, आई कोड गुरु बेसिकली बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी चाहिए। तो इस साल हमारे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस साल जितने बच्चों ने अप्लाई किया सबको मिल गया स्कॉलरशिप। तो नॉर्मली पीएचडी होती है बगैर स्कॉलरशिप के, इस तरह सोचना मुश्किल काम है। तो मोस्टली स्कॉलरशिप या टीएशिप या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, कुछ ना कुछ आपको फंडिंग मिल जाती है। लेकिन आपने सवाल अच्छा किया है। वो इसलिए ना कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी देती है ना पीएचडी में स्कॉलरशिप, पीएचडी में एडमिशन, और उसके बाद कोई किस्म की स्कॉलरशिप सपोर्ट नहीं है, तो इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्टिव नहीं है, उनके पास प्रोफेसर के पास फंडिंग नहीं है, तो वो आप उधर क्यों जाएंगे फिर? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Second, yes, sir. अब हमारी यूनिवर्सिटी में मसलन जो है ना, मैंने बताया ना कि 140 हमारी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट में भी वेरी करता है। हमारी डिपार्टमेंट में 140 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और सारे फंडेड हैं। कोई 100 के करीब टीए या आ रहे हैं, बाकी जो 30-40 हैं उनके पास इसी तरह के कोई फुल ब्राइट या कोई अपनी कंट्री से कोई फंडेड है। सऊदी अरब के मसला हुए हैं तो उनका तो स्कॉलरशिप ही मेरी सैलरी से भी शायद ज्यादा होता है। तो वो कई फुल ब्राइट, कोई मैरी क्यूरी टाइप, इस तरह की चीजें को भी लोग आते हैं। बाकी जो है वो सारे फंडेड हैं ऑलमोस्ट वन वे और दी अदर। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग कोई नहीं है, पीएचडी के लिए आ जाए, तो आपको उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। Okay, sir. जी। Also, sir, actually my plan was to like apply to Fulbright scholarship and then apply to university. So I have like not in the students that are requiring the scholarship Very and good. have better chance to like get into the US university. हाँ चलें, जरूर कर लें फिर। इन दैट केस यू हैव दैट थिंग, तो
that in that case then it is a plus, because उसमें again उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहां वो एक्टिव रिसर्च हो. अब आप वो 4th ईयर यूनिवर्सिटी में चले जाएं कि जी मेरे पास स्कॉलरशिप है, मुझे बस एडमिशन दे दें, तो फिर भी वो उधर एनवायरनमेंट नहीं होगी ना. तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, लेकिन आपके पास पहले स्कॉलरशिप है, तो दैट्स बेटर, राइट? Yes, sir. हाँ, तो so then it will be a plus point in that case. Yes. Thank you very much, sir. जी जी. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि फुल ब्राइट जरूर अप्लाई करें, लेकिन फुल ब्राइट के साथ आप जनरली भी अप्लाई करें, क्योंकि ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप काफी ज्यादा होती है यूएस की यूनिवर्सिटीज में. That is right. तो अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो चांस बहुत आएगी. जिस तरह मैं क्या कहते हैं, जो हमारा आईकोड गुरु में भी एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है, हमारे किसी बच्चे ने फुल ब्राइट नहीं लिया, उन सब ने यूनिवर्सिटीज से फंडिंग ली है. फुल ब्राइट का वैसे स्टाइपेंड वगैरह भी कम ही होता है. एग्जैक्टली, और उसमें फिर वापस भी आना पड़ता है, कुछ लोग वो प्रेफर नहीं करते. प्लस दैट इज ओनली अ फिक्स नंबर कि आपने इतने 150 या 200 बच्चों ने जाना है और उसमें आप compete कर रहे हैं. तो अगर हमने पाकिस्तान से ज्यादा बच्चों को बाहर भेजना है तो फिर फुल ब्राइट के अलावा भी अप्लाई करना चाहिए. तो जी, एनी अदर क्वेश्चन अगर किसी का है कोई तो वी आर ऑलरेडी 25 मिनट ओवर. सो मेरे ख्याल में सवाल नहीं है. चलें सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया. थैंक यू ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब बच्चों का. यार ये बहुत टैलेंटेड है. इनमें से ये जितने भी ये इस वेबिनार में है ना, ये देखना आप 8-10 साल बाद इनमें से अक्सर जो हैं वो बहुत बड़े लोग बने होंगे इंशाल्लाह. और स्पेशली मैं खास तौर पे जो लेडीज फीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट है, मैं उनको बहुत इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि लेडीज की एजुकेशन, फीमेल की एजुकेशन बहुत नीचे है यार पाकिस्तान में. जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि उधर प्रोफेसर अच्छे नहीं है या स्टूडेंट अच्छे नहीं है. उसका मतलब है कि उनका इम्पैक्ट कोई नहीं है सोसाइटी के ऊपर ना. पाकिस्तान ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है, तो यूनिवर्सिटियां क्या कर रही हैं? आप समझ रहे मेरी बात? तो उसमें बिल्कुल औरतों का, उसमें जो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, उसमें ये नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इधर बैठ के अमेरिका में मैं बातें कर रहा हूँ कि प्रोफेसर अच्छे नहीं है, ये स्टूडेंट, ये नहीं है मेरा मतलब. मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटीज का रियल लाइफ पाकिस्तान के ऊपर, तरक्की के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बेसिकली जीरो है. अब स्पेशली खास तौर पे औरतों की एजुकेशन, वो अजीबो गरीब मौलवी आ जाते हैं, हालांकि ऐसा ही कोई बातें नहीं है इस्लाम में. तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इनको जरूर हायर एजुकेशन करनी चाहिए. हायर एजुकेशन जो है वो फिर जाके आगे स्टूडेंट प्रोड्यूस करती है, जो आल्सो टीचर्स भी बन जाते हैं. वो फिर नीचे जाके कॉलेजेस और स्कूल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. सिर्फ यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बेस जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो ऊपर से आती है ना. तो इसलिए जो फीमेल्स हैं वो, उनको जरूर हायर एजुकेशन करनी चाहिए ताकि आगे जाके वो प्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स. तो यहाँ सर मैं आपको सिर्फ हाईकोर्ट गुरु एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे पास जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सीरियस हैं बॉयज की निस्बत. तो जो है क्या कहते हैं, और ये कुछ अरसे बाद इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा एक्चुअली. माशाल्लाह. तो अब ये देखें ना, आप लोग जो फीमेल स्टूडेंट हैं, ये आप करेंगी, बड़े प्रोफेसर बनेंगी, अपनी फील्ड में एक्सेल करेंगी, तो आप रोल मॉडल होंगी बाकी लड़कियों और औरतों के लिए. तो वो चीज बहुत जरूरी है. बिल्कुल. चलें सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. जज़ाकल्लाह. सो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. तो ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी टू ऑल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. फिर मैं सेशन एंड कर देता हूँ. अल्लाह हाफिज. बिल्कुल जी सर. थैंक यू. हाफिज. थैंक यू.